Gauravani Pachari Nirvishesha Sunyavadi Paskachari Sapai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sadi Gaura Bhakta Prabhu Nityananda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sadi Gaura Bhakta Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare
Prema. Can we put PowerPoint of last time? Well, the last version on the screen. Om Ajnana Dimandasya Jananjana Shanaka Shakcho Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Chitchaitanyamanopistam Stapitam Yena Bhutale Svamrupakadam Ham Dadati Svapadantita Vandeham Siyo Siyuda Kamam Shigom Vaishnavam Sam Shigopam Jagachatam Sakanaragnatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savlutam Parajana Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sakarita Shivshakam Vitamsa He Krishna Karuna Sindhu Dinabandha Tyatpate Gopesha Kapkanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanasve Vishavana Sutadevi Pranamama Hari Priye Vankha Kalpta Visha Kripa Sindhu Visha Patnam Pavanabhyo Vaishnavyo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Vishnu Padai Krishna Pastai Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharana Nirvishes Srinivadi Paskacharya Dasatarana Srila Prabhupada Ki. If you can go to the Anahtas. Yeah. The first slide of the Anahtas. Yeah, that's it. So, last time we spoke about, yeah, maybe translation can, yeah. Okay. So we continue with our seminar from Shraddha to Prema, and we discussed last time Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, and we arrived at the beginning of Anartha Nivritti. हरे कृष्णा. तो हमारा जो सेमिनार है श्रद्धा से प्रेम तक, उस पर चर्चा कर रहे हैं. और हमने श्रद्धा से शुरू करके फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया को चर्चा किया. अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे हम आए हैं. So we heard last time that Bhajana Kriya is divided in two sections, Anishtita Bhajana Kriya and Nishtita Bhajana Kriya. Unsteady devotional practice and steady devotional practice. आखिरी बार हम चर्चा कर रहे थे भजन क्रिया के बारे में, अनिष्ठित भजन क्रिया और निष्ठित भजन क्रिया, ये हम चर्चा की. So the unsteady devotional service was characterized by six stages of six stages that तो अनिष्ठित भजन क्रिया में 6 स्तर हैं, हमने देखे थे. if we go वो आता है ना to the previous one मेरे कान में डालने वाली before slide before. Here we have the stages on the screen, 6 stages. Does anyone remember one of these stages? What's the meaning? किसी को याद है कोई एक स्टेज, जो 6 स्टेज देखी थी हमने अनिष्ट भजन क्रिया? मेरे समझ के लिए बोल रहा हूँ. Number 1, Samai. In this case, like a new devotee has enthusiasm. He has enthusiasm in the beginning to do big things, but we find that later in some time he again become cool. Like his enthusiasm is gone. Yeah. For sometimes we puffed up with enthusiasm, and the next moment it's gone. And that, and also, उत्साहमयी अवस्था में जैसे एकदम कभी कभी बहुत ज़्यादा उत्साह आता है और फिर उत्साह चला जाता है. बड़े बड़े कभी कार्य होते हैं फिर एकदम. And one of the other 6, yes. As you explained, niyama akshama means one is not able to follow the principle, means devotional service, but he is not breaking the rule, regulative principles. Just like till Vishaya Sangha means one is not able to give up the Vishaya Sangha, but niyama akshama means one is not able to follow the niyamas, rules of bhakti. Yeah. नियमोक्षम का अर्थ हम बताया था कि नियमोक्षम में हम आध्यात्मिक सिद्धांतों को पालन नहीं कर पाते. भक्ति के जो नियम हैं उन्हें पालन करने में हमें कठिनाई का अनुभव होता है. और विषय संज्ञा में बताया था कि हम जो है इंद्रिय तृप्ति के प्रति ज़्यादा आसक्त होते हैं. दोनों में अंतर. So niyama akshama means inability to maintain vows. Yeah. That, yeah. And Vishaya Sanghara, what is? Like he basically unable to give up the material activity. He makes a vow, let's say, to get up early in the morning every day at 3 a.m. Give this example. He continues also, but after some time he again comes to 3:30, and then again he gets late in Mangala. Yeah.
Visaya, yeah, That is name of this Visaya Sangha. विषय संग्रह जैसे कि वो जो अपने भौतिक कार्य हैं उनमें लिप्त रहता है। जैसे वो निर्णय करता है कि मैं 3 बजे उठूंगा मंगल आरती के लिए, उठते हैं, फिर 3:30 कुछ दिन बाद, फिर 4, फिर मंगल आरती में लेट आते हैं। Visaya Sangha really is focused on struggle with the senses, controlling the senses. लेकिन विषय संग्रह मुख्य रूप से जो इंद्रियों का हमारा संघर्ष है उस अवस्था को विषय संग्रह कहा गया है। Yeah, difficulty to fast on Ekadashi or to get up in the morning. Yeah, these are signs of unsteady bhajana kriya. एकादशी का व्रत पालन करने में कठिनाई, सुबह जल्दी उठने में कठिनाई, ये सब अनिष्ठित भजन क्रिया के लक्षण हैं। Yeah, and then Tarangarangini means yes, one has got to the point of one can finally follow everything. One is able to follow the sadhana. की अवस्था में व्यक्ति जो है भक्त अपनी साधना को फॉलो कर पाता है, अच्छे से साधना कर पाता है, and you develop a good character. और अच्छे चरित्र का निर्माण भी होता है तरंगरंगिणी की अवस्था। And you attract people, they start to praise you. और आप लोगों को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, लोग आपकी प्रशंसा करने लगते हैं। And you think, yes, I'm worthy of this praise. और आप सोचते हैं हाँ, अब मैं जो है इस मान सम्मान के योग्य हूँ बिल्कुल। And one enjoys the praise. उस प्रशंसा को हम भोग करने लगते हैं। Yeah. So that was Tarangarangini. We had also Vyuda Vikalpa. तो तरंगरंगिणी की बात हो गई, अब साथ में हमारे पास व्यूढ़ विकल्प भी एक स्थिति है। Any idea what this is about? किसी को आइडिया है व्यूढ़ विकल्प के बारे में बताएं, कोई हाथों पर बताइए। In this stage, one thinks like that. He has many options that I should do this or I should do that, like that. I should stay ashram or I should go at home. Just like you gave an example of, just like I should live at home till my parents are alive. I should do service. Yeah. And then he thinks that after that I will come to ashram. Like that, his mind is flickering. Multiple options. तो व्यूढ़ विकल्प की अवस्था में वो हमेशा सोचता रहता है कि ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, करके वो सोचता है कि मैं अभी ब्रह्मचारी बन जाऊँ, फिर सोचता है नहीं मैं घर पे ही रहता हूँ, जब माता पिता की सेवा करता हूँ, जब माता पिता चले जाएंगे तब उसके बाद फिर मंदिर में चले जाएंगे। तो इस तरह चिंता मनन में लगा रहता है संशय में। Yeah, so that's the mind is going from one thing to another. तो ये मन इधर से उधर जा रहा है बाहर। So one moment he thinks, yeah, I will give everything up, go to Vrindavan, chant 64 rounds, and become a pure devotee. Finished. I leave tomorrow. एक बार सोचता है कि चलो मैं वृंदावन जाऊंगा और 64 माला जप करूंगा, शुद्ध भक्त बनूंगा, बस पूरा खत्म खेल, कल ही चला जाऊंगा वृंदावन। But the next day he thinks maybe it's better that I start a Krishna conscious family and marry and so. अगर सोचता है लेकिन लग रहा है कि अच्छा ये हो कि मैं कृष्ण भावनावाद परिवार का विकास करूं, शादी कर लेता हूँ। तो फोटो डाल दो हिंदी। Yeah. And then we have one left, Gana Tarala. What was Gana Tarala? एक बच गया, घन तरल। ये क्या? घन तरल। हाँ? नहीं। He wants to say. Yeah. Ghana Tarala means sometimes he becomes very much like fixed up in Krishna consciousness, like he is able to follow rules nicely, and Tarala means after some time he is very slow or not able to practice Krishna consciousness. Sometimes become dense, sometimes become very. Yeah. Okay, translated. तो ये जो है घन तरला की अवस्था, ये अवस्था है कि कभी भक्ति बहुत गाढ़ी हो जाती है, भक्ति में एकदम तीव्रता, ऐसा लगा तीव्रता आ गई, बहुत उपवास या इस तरह कुछ, और फिर एकदम फिर तरलता आ जाती है, फिर साधना एकदम ढीली हो जाती है।
तो एक बार घाड़ी sometimes he studied diligently, but because he has no taste yet and he cannot really deeply understand it, the next day he's not studying. कभी कभी एकदम शास्त्र बहुत ज़्यादा पढ़ लिए लेकिन उसको रुचि तो है नहीं और समझ में गहराई से नहीं आ रहा तो अगले दिन फिर बिल्कुल ही छोड़ दिया पढ़ाई नहीं की. So these are the 6 stages of unstudied devotional service. तो ये 6 अवस्थाएं हैं अनिष्ठित भजन क्रिया के स्तर. Yep. I did not get the 5 difference between विषय सगरा नियम अच्छमा. Vishaya Sagara means struggle with the senses, with the Vishaya, with the senses, to control them. Yeah. And the other is Niyama Akshama, means the inability to maintain vows. Like, so, it looks like because his senses are not controlled, he is not able to he's not able to follow the rules. It looks like that. There is a connection, but not always. That you make a vow. You make a vow to fast on Ekadashi. Yeah. But then you are unable to follow it because the mind is too disturbed, and you meditate on eating instead of Krishna. And you indulge in it. So that's the inability to maintain the vow that you make. And struggle to control the senses, that, yes, is following the 4 regulative principles, and especially not overeating. So that's not really a vow you make, but we should not overeat. But every time it happens, and one cannot control it. So that's Vishaya Sagara. तो प्रश्न था कि विषय संग और नियम अक्षम में क्या अंतर है. लग रहा है कि चूंकि इंद्रियां नियंत्रण नहीं इसलिए नियम को पालन नहीं कर पाते. तुम्हारा हमारे संबंधित हैं दोनों लेकिन हमेशा नहीं. जैसे मान लीजिए आपने व्रत लिया कि एकादशी पे हम कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन क्योंकि आप जो है उसका पालन नहीं कर पाए, आपका मन अनियंत्रित है, तो ये है नियम अक्षम. लेकिन विशेष संग है कि जैसे 4 नियम पालन करेंगे आपको असुविधा पड़ेगी. But then at a certain moment, one becomes steady in one's devotional service. लेकिन एक अवस्था है कि जब निश्चित भजन क्रिया के स्तर पे हम आ जाते हैं. So that's nishtita bhajana kriya. वो है निश्चित भजन क्रिया की अवस्था. So this nishtita bhajana kriya, and then after that one enters anartha nivritti. उसके बाद व्यक्ति आता है अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे. But there are obstacles still to come to this anartha nivritti. लेकिन इसके स्तर पे आने पे भी मतलब इसमें बहुत सारी बाधाएं हैं इस तरह आने पे. And they are called anarthas. Yes. These obstacles are called anarthas. और इन जो अवरोध हैं इनको कहा जाता है अनर्थ. And there are 4 kinds of anarthas. 4 प्रकार के अनर्थ हैं. So these 4 kinds of anarthas are on the screen here. The first is anarthas arising from sinful activity. 4 तरह के अनर्थ आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं. पहले अनर्थ हैं जो पापमय कार्यों के द्वारा अनर्थ उत्पन्न होते हैं. So and anarthas arising from pious activities. दूसरे तरह के अनर्थ हैं जो पुण्य कर्मों के माध्यम से उत्पन्न होते हैं. Anarthas coming from offenses. तीसरे जो है अपराध करने का अनर्थ उत्पन्न होते हैं. And anarthas coming from the imperfect practice of devotion, of bhakti devotional service. होता है कि भक्ति में सेवा का सही से हम अभ्यास नहीं करते, वहाँ से जो अनर्थ उत्पन्न होते हैं. So we started to discuss last time. Next slide. This anarthas that arise from sinful activities
that these are these 5 kleshas we discussed. तो पिछली बार हमने ये 5 क्लेशों की चर्चा की थी। ये अनर्थ हैं जो कि पापमय कार्यों के कारण उत्पन्न होते हैं। That so thus ignorance, false ego, attachment, hatred, and addiction to evil. ये है कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। Yeah. So anarthas from pious activities. अब बात करें जो पुण्य कर्मों से जो अनर्थ उत्पन्न होते हैं वो देखते हैं। What is that? Pious activities, yes, they give results, fruits. Yes, they give fruits, pleasure. कर्म जो है वो फल प्रदान करते हैं। And one is attached to this pleasure. तो फल मतलब पुण्य कर्मों के द्वारा सुख मिलता है और उस सुख से हम आसक्त हो जाते हैं जीव। So these pious activities are here included in the category of kleshas, really. तो पुण्य कर्मों को भी यहाँ पे एक तरह से क्लेशों की श्रेणी में रखा गया है। Because if one strives for material enjoyment or for liberation, that is an obstacle to get bhakti. तो यदि कोई वास्तव में भौतिक भोग या जो है मुक्ति के लिए प्रयास कर रहा है तो वो भक्ति की कैटेगरी में नहीं आते। And it prolongs your existence in the material world. भुक्ति मुक्ति की इच्छाएं रहेगी तो भौतिक जगत में आपका जो जीवन अवधि बढ़ती चली जाएगी। So here we have these 3. 3 यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। Why these pious activities are anarthas? कि पुण्य कर्मों को अनर्थ क्यों कहा गया है? First, the definition, it's addictions to the result of pious action. पहला तो क्या है, परिभाषा जो है कि एडिक्शंस टू द रिजल्ट, मतलब जो पुण्य कर्म है उनके परिणामों के प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है। And in the next point here, that it is said, yes, this result of pious actions can be bhukti or mukti. पुण्य कर्मों का फल 2 हो सकते हैं, या तो भुक्ति या फिर मुक्ति। But both will prolong your existence in the material realm. लेकिन दोनों ही स्थितियों में भौतिक जगत में आपकी जीवन अवधि बढ़ती चली जाएगी, भुक्ति या मुक्ति की अवस्था। So now we have anarthas arising from offenses. अभी है तीसरे प्रकार के अनर्थ जो कि अपराधों से उत्पन्न होते हैं। We are referring here to nama aparat and seva aparat. हम यहाँ पे नाम अपराध और सेवा अपराध की चर्चा कर रहे हैं। So when seva aparat is when you enter the temple with your shoes. जैसे सेवा अपराध क्या है कि जैसे आप मंदिर में प्रवेश किए जूते पहन गए। They are in itself not a cause of anarthas. ये अनर्थों का कारण नहीं है। And usually, if we are in Vaidisana Bhakti, it will not have an effect on the sincere devotee who is engaged in constant service. और यदि हम वैदिक साधना भक्ति के स्तर पे हैं तो इससे उस गंभीर भक्त का फर्क नहीं पड़ेगा जो भक्ति की विधि में गंभीरता से लगा हुआ है। One who chants constantly the holy name, he cancels the effect of seva aparat. यदि निरंतर हरिनाम का जप किया जाए अपराध रहित होकर तो सेवा अपराध की जो अपराध है उन पे हम विजय पा लेते हैं। So these anarthas cannot grow when we are deeply engaged in Vaidisana Bhakti. तो ये सेवा अपराध से उत्पन्न अनर्थ जो हैं, जब वैदिक साधना भक्ति विधि में दृढ़ता से लगे हुए होते हैं तो ये अपराध बढ़ नहीं पाते फिर ज़्यादा। But if one perform these seva aparat premeditated, लेकिन यदि कोई जानबूझ के ये सेवा अपराध करते हैं
And I think that they will be cleared by chanting the holy name and by constant service. और सोचे कि ये हरिनाम करेंगे और निरंतर सेवा करेंगे तो ये अपराध क्लियर मुक्त हो जाएंगे इनसे अपराधों से। Then the seva-apparaat becomes naam-apparaat, तब वो सेवा अपराध नाम अपराध में बदल जाएगा। committing sin on the strength of the holy name, the seventh offense. सातवां अपराध है ना, नाम के बल पर पाप करना, वो कैटेगरी में चला जाएगा। That so then Madhurya Kanabini discusses the 10 offenses in depth. उसके बाद माधुर्य कादम्बिनी वर्णन करती है कि ये 10 अपराध हैं, ये क्या क्या है। But also Madhurya, the Harinam Sintamani explains what are anarthas. साथ ही हरिनाम चिंतन में बताया गया है कि अनर्थ वास्तव में होते क्या हैं। And that, अनर्थ क्या है ये बताया हरिनाम चिंतामणि। so before coming to that point, just go to the, to the anarthas. Yeah. So first, this is Chaitanya Mahaprabhu conversing with Haridas Thakur. तो हरिनाम चिंतामणि में चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से बातचीत कर रहे हैं। So he said, we cannot chant the pure name because it's covered by clouds. जो कहते हैं कि हम हरिनाम शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये बादलों से ढका हुआ है। Like the clouds is covering the sun, these anarthas are covering the pure name. इस तरह बादल जो है सूरज को हमारी दृष्टि ढक लेते हैं, उस तरह अनर्थ जो है शुद्ध नाम को ढक रहे हैं। So when ignorance and anarthas are in our heart, then this potency of the holy name cannot have its full effect. जब तक अनर्थ है या अविद्या हमारे हृदय में है, तब तक ये हरिनाम का जप है ये पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाते। And then he speaks about avidya, ignorance, and he speaks about different types of anarthas. He's Haridas Thakur saying? Haridas Thakur then explains different kinds of ignorance that cover the potency of the holy name and different kinds of anarthas. उसके बाद हरिदास ठाकुर बताते हैं कि अलग-अलग तरह की जो ज्ञान है जो कि हरिनाम को बादल के रूप में ढक लेते हैं और साथ ही अनर्थ जो किसके कितने प्रकार के, इसे बताया हरिनाम चिंतामणि में। So the ignorance says that one does not know the real spiritual nature of the holy name. तो अज्ञान का अर्थ ये है कि हरिनाम का जो वास्तविक आध्यात्मिक स्वभाव है वो व्यक्ति उसको जान नहीं पा रहा है। So the holy name is Krishna. ये हरिनाम जो है वो तो स्वयं कृष्ण है। That and Haridas Thakur is saying when one does not know Krishna's nature, फिर हरिदास ठाकुर बताते हैं कि जब कोई कृष्ण के स्वभाव को नहीं जानते हैं, because then that's a problem. One must know that Krishna is the Supreme Lord. तब समस्या का कारण है। व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि कृष्ण ही हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। Because if we don't know Krishna's position, we cannot know our own self. We are a part and parcel of Krishna. जब तक हम कृष्ण के स्वभाव को नहीं जानते, तब तक ये भी नहीं जान पाएंगे कि हमारा स्वभाव क्या है। हम कृष्ण के अंश हैं। Therefore, instead of thinking that we are part and parcels of Krishna, we think ourselves part and parcels of this world.
इसलिए हम ये नहीं सोच पाते कि हम कृष्ण के अंश हैं, बल्कि सोचते हैं कि हम तो इस संसार के ही हैं ना। And one takes shelter of this world of which is temporary, and the enjoyment is also temporary and therefore illusory. तब व्यक्ति संसार की शरण लेता है जो क्षणिक है, और ये जगत भी क्षणिक है और खुद भी क्षणिक है, और ये सब मोह माया से भरा हुआ है, illusion. So Haridas Thakur said, knowledge means that knowing that Krishna is the Lord. हरिदास लोग कहते हैं कि ज्ञान का अर्थ ये है कि ये समझना कि कृष्ण भगवान है, And that the living entities are his servants. और जो जीव हैं वो सारे उनके दास हैं। And that the whole material world is a non-conscious gross manifestation of the Lord. और ये पूरा भौतिक जगत है, ये अचेतन अवस्था में भगवान की स्थूल सृष्टि का प्राकट्य है। So if we are not aware of these points, then our eyes are clouded by these anarthas, and we cannot see or perceive or receive the potency of the holy name. तो होता है कि ये हम जब इन ज्ञान को नहीं जानते हैं तो अनर्थ के बादलों द्वारा हमारी आंखें ढक जाती हैं और हम दर्शन नहीं कर पाते भगवान का, या हरिनाम की शक्ति को हम ग्रहण नहीं कर पाते, प्राप्त नहीं कर पाते। So what Haridas Thakur is saying is that we cannot chant and experience the pure name when our heart is covered with ignorance and anarthas. तो हम क्या कह रहे हैं सार में कि जब तक हमारा हृदय अविद्या और अनर्थों से ढका हुआ है तब तक हम शुद्ध नाम का अनुभव नहीं कर पाएंगे। So to remove this ignorance and these anarthas, तो अनर्थों और अविद्या को हटाने के लिए we must chant the holy name in namabhas, a reflection of the holy name. हरिनाम हमें करना पड़ेगा, नाम आभास के स्तर पे करना पड़ेगा। But we will only enter this anartha nivritti when we give up nam aparat. अनर्थी अवस्था में लेकिन हम तभी आ पाएंगे जब हम नाम अपराध छोड़ देंगे। So even if you attain nishtita bhajana kriya, you become steady. तो यहाँ तक कि आप यदि निष्ठित भजन के स्तर पे आ गए, निष्ठित हो गए, you will enter only anartha nivritti of namabhas after giving up these offenses. तो भी आप नाम आवास का जो स्तर है ना अनर्थ निवृत्ति का, उस पर तब आएंगे जब आप ये अपराध को त्याग देते हैं। Therefore, Guru Maharaj made it a point, you should know these 10 offenses. इसलिए श्री भक्ति चौधरी गुरु महाराज इस बात पर जोर देते थे कि 10 अपराध आपको याद होने चाहिए पहले तो, And recite them every morning in the temple. हम हर दिन सुबह पाठ करते हैं मंदिर में, Because that's the point. Once we come over these 10 offenses, we enter anartha nivritti of namabhas. क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है कि हम एक बार 10 अपराधों के पार चले जाएंगे तो नाम आवास के जो अनर्थ निवृत्ति का स्तर है वहां पे आ जाएंगे। So this anartha nivritti of namabhas, that once it starts, the gross anarthas are going quite quickly. Takes a few years. तो नाम आवास की जो अनर्थ निवृत्ति है, ये फिर उस स्तर पे अनर्थ जो पहले स्थूल अनर्थ जो हैं जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। Intermediate thinking. Please. Yes, नाम आवास, before नाम आवास अनर्थ does start like Namabhas and anartha nivritti before is the same. Okay, it's the same. It's the same. Okay. At the Nam Aparadha stage, there is no anartha. Namabhas is mentioned here in Harinam Chintamani, and it's explained in terms of the chanting of the holy name. Okay. Anartha nivritti is the same, but is explained in Madhurya Kandambini in terms of general devotional service, the 9 angas, and so on. Is that clear? I can. You can translate.
तो महाराज बता रहे हैं कि जो नाम आभास जो शब्द हैं वो हरिनाम चिंतामणि में आए हैं, और नाम के संबंध में अनर्थ निवृत्ति कैसे होती है वो बताया हरिनाम चिंतामणि नाम आभास के सापेक्ष। और वही अनर्थ निवृत्ति शब्द वो प्रयोग हुआ है माधुर्य कादम्बिनी में, कि भक्ति में जैसे आगे बढ़ेंगे तो कैसे अनर्थ निवृत्ति होगी भक्ति में सेवा में। So दोनों एक ही। if after 30-40 years this process of anartha nivritti is finished, we come to nishtha. जब 30-40 साल हो गई भक्ति, अनर्थ निवृत्ति का स्तर खत्म हो गया, हम आ जाते हैं निष्ठा के स्तर पे, अनर्थ निवृत्ति कंप्लीट। One is liberated. वो निष्ठा के स्तर पे आ गए तो मुक्त हो जाता है व्यक्ति। Brahma bhuta pashanatmana sustina kankshati. One is completely peaceful, no lamenting, no hankering for anything in this world, and only fixed on Krishna. बस पूरी तरह व्यक्ति शांत स्तर पे आ जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा शोक जाती है, कोई शोक नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, बस कृष्ण की सेवा में आनंद में है। And if one then continues to chant the holy name, और यदि उस स्तर पे फिर हरिनाम करना निरंतर जारी रहते हैं, यदि if it will not purify the heart, because the heart is already pure, तो वो फिर हृदय को शुद्ध नहीं करेगा हरिनाम, कि हृदय ऑलरेडी शुद्ध हो गया है। now then it will produce love of Krishna. तब ये कृष्ण प्रेम को जन्म देगा। And this stage after that begins with Nishtha is called the chanting of the Sudanam, the pure name manifest like a full sun. So after one attains Nishtha, then the chanting of the holy name does not purify the heart, but produces love of Godhead. तो जब तक निष्ठा के स्तर पे आ जाते हैं, तब हरिनाम जो कर रहे हैं फिर उससे हृदय शुद्ध नहीं होता, कि हृदय पहले ही शुद्ध हो चुका है, फिर वो नाम कृष्ण प्रेम को जन्म देते हैं। Then when one chants the Sudanam, the full potency of the holy name becomes manifested. उसके बाद धीरे धीरे जब शुद्ध नाम करते हैं, तब हरिनाम का जो पूरा प्रभाव है वो प्रकट हो जाता है। So you have Namabhas, which is Anartha Nivritti, and from Nishtha on we chant Sudanam. तो नामाभास के स्तर पे आते हैं, फिर अनर्थ निवृत्ति हो जाती है नामाभास में, और फिर निष्ठा के स्तर पे हम शुद्ध नाम। It's nice to hear that, but first we have to get rid of these anarthas. सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो पहले हमें अनर्थ से मुक्त होना पड़ेगा। And Haridas Thakur gives another classification here of the anarthas than Madhurya Kanambini by Vishwanath Chakravarti Thakur. साथ हरिदास ठाकुर यहाँ पे अनर्थों का एक और परिभाषा देते हैं जी नरना चिंतामणि से, जो कि थोड़ा जो अलग है। चक्रवर्ती पाद ने जो बताया माधव का धर्म उससे थोड़ा अलग है। So he classifies the anarthas in three kinds. He says Asat, Trishna, Hridaya Daurbalyam and Aparat. तो यहाँ तीन तरह से वर्गीकृत किया गया है अनर्थों को। असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्यम, अपराध। अपराध प्रवणता। Aparat, yeah. That's the third one. They are the Aparat, yeah. Mm-hmm. Now in the next slide. अगले स्लाइड पे जाइए ब्रो। So first we have the Asat Krishna is explained as thirst, craving for material objects in this world. असत तृष्णा को बताया गया है कि भौतिक जो विषय हैं उनके लिए लालच इस जगत में। So असत तृष्णा, yeah, one wants wealth. कोई चाहता है कि धन चाहिए, धन। That people pray to Krishna, please give me a nice wife and a house at the sea. Jagadisha Hari. लोग कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि भगवान अच्छी पत्नी दीजिए और अच्छा घर दीजिए, जय जगदीश हरे। So yes, that or another kind of this Asat Trishna
his desire for heavenly planets, going to heaven, performing karma kanda and going to heaven. और एक और तरीका है असत कृष्ण का कि कर्म कांड का अभ्यास करके स्वर्गलोक में जाने की इच्छा है. Of one desires mystic powers. या फिर कोई योग सिद्धि की इच्छा करता है. Of one wants to merge with Brahman. या फिर कोई ब्रह्म में विलीन हो जाने की इच्छा करते हैं. So asat trishti. ये सब असत कृष्ण की कैटेगरी में आ जाते हैं. And then you have Hridaya Daurbalyam. उसके बाद हृदय दौर्बल्यम की अवस्था आती है. हृदय दौर्बल्यम. Yeah, that's Haridas Thakur said it's attachment to trifling things unrelated to Krishna. हरिदास हम बताते हैं कि ये है कृष्ण जो संबंधित नहीं है, जो चीजें उनके प्रति हमारी आसक्ति है. Yeah, one is attached to performing deceitful activities. Which activity? Deceitful. हाँ, ऐसे कपटतापूर्ण जो है कार्य करने की किसी के अंदर प्रवृत्ति है. One becomes envious of others, of others' material progress. इसमें है कि दूसरों की उन्नति से ईर्ष्या हो जाती है. ये भी हृदय दौर्बल्यम की अवस्था में होता है. One wants position and fame. और फिर चौथा है कि व्यक्ति को पद चाहिए, सम्मान की इच्छा है. ये भी हृदय दौर्बल्यम है. And then you have the offenses. और फिर तीसरी जो है अनर्थ, वो है अपराध. So, nama aparat and seva aparat. नाम अपराध और सेवा अपराध. And nama aparat are the 10 offenses. नाम अपराध तो 10 अपराध है. It's lack of respect. ये है कि आदर का भाव कम है हमारे में. That's what the 10 offenses is about. 10 अपराध का यही सार है. मतलब आदर नहीं है हमारा नाम के प्रति. Lack of respect to Krishna and his holy name. कृष्ण और उनके नाम के प्रति आदर का अभाव. Lack of respect to the spiritual master, not following his instructions. आध्यात्मिक गुरु के प्रति आदर का अभाव है, उनके उपदेशों की अवज्ञा करना. Lack of respect to the instructions in the Vedas. वेदों के आदेश उनके प्रति अनादर है. That का उल्लंघन करना. So lack of respect against the holy name, and thinking it's imagination, exaggeration, and so on. और हरिनाम की जो महिमा है उसके प्रति आदर का अभाव है. सोच रहे हैं कि उसको मनगढ़ंत व्याख्या करना या उसको अतिशयोक्ति कह दिया ऐसा समझना. So how can we overcome this? तो इसको हम पार कैसे करें? Certainly it's good to chant them every day, then we become conscious of them, but we may be sometimes a little careful if we don't forget them. ये तो ठीक है कि हम उनको उच्चारण करते हैं और उनको याद करते रहते हैं. हाँ? और उसके प्रति केयरफुल रहें, उसके प्रति हम सावधान रहें, सचेत रहें, तो भूल न जाएं. But to really overcome them, we need a change of heart. लेकिन वास्तव में यदि ये नाम अपराध के परे जाना है तो हृदय परिवर्तन होगा, तभी जा पाएंगे. And how to cultivate that respect. और कैसे ये आदर का भाव आए नाम के प्रति, कृष्ण के प्रति. To cultivate that respect, one must hear daily the Bhagavatam. उस आदर को उत्पन्न करने के लिए प्रतिदिन हमें श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए. It's very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. By hearing the Bhagavatam daily, जब भागवतम का रोज श्रवण करेंगे, surely that respect will be cultivated in the heart. धीरे धीरे वो आदर आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा. And we combine that with the chanting every day, and that combination helps to improve our chanting. और फिर साथ में उसको हम सम्मिलित करते हैं प्रतिदिन नाम का जप करके. तो ये जो संयुक्त प्रयास जब होगा तो हरिनाम भी हमारा अच्छे करने में मदद मिलेगी हमको, अच्छे से करने. The Bhagavatam is Krishna's mercy present in Kali Yuga.
भागवतम जो है इस कलयुग में कृष्ण की उपलब्ध कृपा है। Sanatan Goswami said the Bhagavatam is my best friend, my best companion. सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भागवतम जो है मेरे सर्वश्रेष्ठ मित्र है, सर्वश्रेष्ठ साथी सहयोगी है। Krishna left at the end of Dwapara Yuga, but then he reappeared as the Bhagavatam for the people in Kali Yuga. कृष्ण जो है द्वापर युग के अंत में प्रकट हो गए, लेकिन वो पुनः प्रकट हुए इस कलयुग के लोगों के लिए श्रीमद् भागवतम के रूप में। It's a torchlight where people in Kali Yuga will get a light from. ये ऐसे सूर्य के रूप में है जहाँ पे कलयुग के लोग जिससे प्रकाश प्राप्त करेंगे। So this torchlight will destroy this avidya. तो ये जो सूर्य प्रकाश के रूप में है, ये अविद्या के अज्ञान को नष्ट कर देगी, अविद्या के अंधकार। And that's important to understand. इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। Srila Prabhupada said to his devotees, you should read my books. श्रील प्रभुपाद ने अपने भक्तों से कहा आपको मेरी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। If you do not read my books, Srila Prabhupada said, yeah, why do you think that I'm translating it in the night, giving up my sleep, just translating it? Why am I doing that? श्रील प्रभुपाद ने कहा कि यदि आप मेरी पुस्तकें नहीं पढ़ोगे तो फिर मैं इनका अनुवाद क्यों कर रहा हूँ? अपने नींद को खराब करके, रात्रि जागरण करके मैं इन पुस्तकों का अनुवाद कर रहा हूँ, तो आपको इनको पढ़ना चाहिए। That it's for you to read. ये आप लोगों के पढ़ने के लिए ही लिख रहा हूँ। And then he said something very important. और उसके बाद श्रील प्रभुपाद ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। If you are not reading my books, then Guru Avahya, you are offense to the spiritual master. यदि आप मेरी पुस्तकें नहीं पढ़ रहे हैं तो ये तो गुरु अवज्ञा ही है, आध्यात्मिक गुरु के प्रति अपराध हो रहा है। So we chant our rounds every day. तो हम हरिनाम तो हम माला तो हमारी हर दिन करते ही हैं। If we would not do, we would feel very bad. यदि माला हमारी नहीं होगी तो हम बहुत अंदर बुरा लगता है। But yes, but we should have the same feeling if and they did not read the Bhagavatam. लेकिन यही भावना हमारे तब भी होनी चाहिए जब दिन खत्म हो गया, भागवत हमने नहीं पढ़ी है तो। That because as long as we cannot give up this namaparat, we don't have the proper attitude for the chanting. तो ये बात है कि जब तक नाम अपराध से मुक्तम नहीं हो जाएंगे तब तक हरिनाम करने का जो सही मनोभाव है वो आएगा नहीं हमारे पास। Taro apis saisnene, taro trinat apis nechne, taro apis saisnene, amana madadena kirtana sadahari. So when one is tolerant as a tree and humble as a straw in a street and is ready to give all honor to others, in that state, and does not ask honor for oneself, these four things, then one can chant the holy name constantly. स्वयं को तृण से अधिक नीच मानकर, वृक्ष से अधिक सहिष्णु होकर, अपने मानसिक भावना सर्वथा मुक्त और हमेशा दूसरों को मान देने की भावना रखना, ऐसी अवस्था में व्यक्ति भगवान नाम हरत कीर्तन कर सकता है। So that's the situation of the heart we need. तो ये हृदय की हमको ऐसी अवस्था हमको चाहिए हृदय में। But that is not a thing like sometimes you see devotees are very nice and serving, but what is in their heart? You don't know. तो ये ऐसी बात नहीं है कि कभी कभी लगता है कि हाँ भक्त बहुत अच्छे और बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं, लेकिन हृदय में क्या है ये तो आप नहीं जानते हो ना, उनके हृदय में क्या है। So that's this has to develop within our heart, and then we will be successful in the chanting and in the practice of our devotional service. तो ये भावना हृदय में होनी चाहिए, तब जो है भक्ति में सेवा का अभ्यास हम अच्छे से कर पाएंगे। Because it deepens our sambandha jnana.
क्योंकि इससे हमारा संबंध ज्ञान गहरा होता है भगवान के साथ। Sambandha Gyan is the knowledge required to re-establish our relationship with Krishna. संबंध ज्ञान वो ज्ञान है जिसकी आवश्यकता है हमारा भगवान के साथ जो संबंध है उसको पुनर्स्थापित करने के लिए। Like I gave an example, Krishna says, Pragati Kriyamani Gun Karmana Sarvasankar Vimudatma Kartamit Manyate. Says everything is done by material nature, and one who thinks that he does things himself is a Vimuda, super S. एग्जाम्पल के लिए बताया है प्रकृति क्रियमाणी गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो प्रकृति गुणों के द्वारा सारे कार्य संपन्न किए जाते हैं और जो व्यक्ति सोचता है कि मैं हूँ कर्ता तो वो मूर्ख है। So what is missing here? तो यहाँ पे क्या चीज नहीं है, मिसिंग क्या है? Why are we Vimudas? हम मूर्ख क्यों हैं, विमूढ़ क्यों हैं? Because we don't know really what Krishna is. क्योंकि हम जानते नहीं है कृष्ण है क्या, कृष्ण है कौन। We think ourselves the doer in this world. हम सोचते हैं इस जगत में हम ही हैं कर्ता। But everything we do is factually, everything we do besides desiring is done by material nature, and Krishna does it. लेकिन बात यह है कि इच्छा करने के अलावा, जीव इच्छा करने के अलावा बाकी जो भी गतिविधियां होती हैं वो भौतिक प्रकृति के द्वारा ही संपन्न होती हैं और कृष्ण ही उसको करते हैं। So if this Sambandha Gyan is deeply established within your heart, you live always in a relationship with Krishna. You cannot forget him. तो संबंध ज्ञान यदि आपके हृदय में गहरी तरह से स्थापित हो जाता है तो आप हमेशा कृष्ण के संबंध के साथ इस संसार में रहते हैं, आप उनको भूलते नहीं हैं। So don't take it just something else theoretical. Yes, we know Krishna is God and I'm his servant, okay. तो इसको कुछ आप इस तरह मत लीजिए कि बस सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान है, हाँ हम जानते हैं कृष्ण भगवान है, हाँ अच्छे होंगे, ऐसा नहीं। But yes, then we engage in the process abhideya. जब हमें संबंध का पता चल जाता है तो फिर हम अभिधेय यानी कि भक्ति में विधि में, भक्ति में सेवा में कि विधि जो है उसमें संलग्न हो जाते हैं। We perform Vaidhi sadhana bhakti, 64 items of devotional service mentioned in the Vedas, in the Nectar of Devotion, and we perform them under the instruction of the spiritual master, Vaidhi sadhana bhakti. हम वैधि साधन भक्ति में संलग्न होते हैं जो कि 64 में बताए गए हैं श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में। तो आध्यात्म गुरु के मार्गदर्शन में हम इन अंगों का पालन करते हैं। If we perform this process seriously and sincerely, it will start driving out these anarthas. यदि हम इस विधि को गंभीरता से और निष्कपट भाव से पालन करेंगे धीरे धीरे अनर्थ एक करके दूर होने सब लग जाएंगे। So we must take up the chanting of the holy name with the correct knowledge of this sambandha. तो ये हरिनाम का जो जप है इस विधि को हमें ग्रहण करना है संबंध ज्ञान को सही से समझते हुए। And the hearing of the Bhagavatam will help us to cultivate that. तो हर जो और साथ में भागवतम का जो श्रवण है वो भक्ति के अनुशीलन में हमारी मदद करेगा। So this namabhas is the beginning of anartha nivritti, the cleansing of the heart. नाम आभास है वो अनर्थ निवृत्ति की शुरुआत है, हृदय का शुद्धिकरण हुआ है। And practicing yoga will not have that same effect. और जो योग सिद्धियों के लिए जो अभ्यास होता है या योगाभ्यास होता है वो उतनी मदद नहीं करेगा। Performing fire sacrifices will also not have that effect. हम पुण्य कर्म करेंगे उससे भी ये प्रभाव नहीं पड़ेगा। Following varnashram will also not have that effect. वर्णाश्रम पालन भी कोई फायदा नहीं देने वाला है। Performing austerities will also help. तपस्या भी Does not help much. ज़्यादा मदद नहीं तपस्या। But this namabhas is going to purify the heart, and it will lead us to nishtha and pure bhakti. जो नाम आभास है ये हृदय को शुद्ध करता जाएगा और फिर निष्ठा और शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ जाएगा। So this yoga, these austerities and so on, they will never lead to bhakti. लेकिन ये योगा है, तपस्या, ये सब ये भक्ति को तो कभी लेके जाएंगी ही नहीं ये सब चीज़। It is said the fortune we have in this age is
that this holy name we can overcome all the bad effects of Kali Yuga. ऐसा बताया जाता है कि इस युग में हमारे लिए वरदान यही है कि केवल हरिनाम के माध्यम से ही हम कलयुग के सारे दोषों को जय कर सकते हैं. So evil influences of ghosts, demons, spirits and so on and bad planets in your astrological chart will be nullified. तो जो भूत हैं, प्रेत हैं, इन सब का जो प्रभाव है बुरा, ये भी हरिनाम के माध्यम से एकदम We know Guru Maharaj filmed it in Abhay Charan when Srila Prabhupada was with his family in India. Then his business went a bit good and he decided to buy a house. जाते हैं शिलो में जब प्रचार शुरू किया था तब उन्होंने भी एक घर खरीदने की सोची थी. And nobody wanted to buy the house because there were ghosts in the house. और कोई ज़्यादा नहीं था उस घर को खरीदें क्योंकि उसमें एक भूत था. So he could buy it for a good price. तो इसलिए सस्ती अच्छी कीमत पे प्रभुपाद जी को मकान मिल गया क्योंकि भूत था ना. And then he entered the house and started to perform kirtan. प्रभुपाद जी घर में गए और फिर कीर्तन करना शुरू कर दिया. And all the ghosts were gone. और All the ghosts were gone. सब भूत भाग गए. That it is said even the residents of the hellish planets can achieve liberation by chanting in Namabhas. ऐसा कहा है कि नरक के जो निवासी हैं वो भी नाम आभास में हरिनाम करेंगे तो वो भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं. And it destroys the effects of all sinful activities. सारे पाप कर्मों के फलों को नाम आभास मुक्त कर देगा. So thus aparabdha karma will come to parabdha karma. That's destroyed. That will not happen. और जो अपराध कर्म प्रारब्ध कर्म बनते हैं वो नहीं होगा, वो सब खत्म. So it's much more powerful than all the other processes and karma kanda and so on. तो कर्म कांड या अन्य की जो बाकी विधियां हैं उन सब सबसे बहुत शक्तिशाली है ये भक्ति की विधि जो है हरिनाम कीर्तन. By chanting Namabhas, Haridas Thakur says, one can go to the border of Vaikuntha. नाम आभास करने से हरिदास बोलते हैं कि वैकुंठ के द्वार तक पहुंच जाएंगे आप. But then he says there are four kinds of Namabhas. अब बताते हैं कि 4 प्रकार के नाम आभास हैं. That's all there. But I don't know if you have the last slide. लास्ट स्लाइड है अपने पास. This is the last. Yeah, that is it. Namabhas. Yeah. ये है नाम आभास की लास्ट. These are these 4 kinds of Namabhas. ये हैं 4 प्रकार के नाम आभास. So we will try to understand what is this Namabhas. तो पहले हम समझने का प्रयास ये करेंगे कि नाम आभास है क्या. It's chanting unintentionally the holy name. ये है कि हम हरिनाम का जप कर रहे हैं लेकिन हम जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, बस हो रहा है उच्चारण unintentionally. One chants the holy name by accident. इत्तेफाक से हरिनाम मुंह पे आ गया. But there are 4 kinds. 4 प्रकार है नाम आभास. Sanketa, that refers to Ajamil. ये जो इस तरह पहले संकेत है. संकेत मतलब अजामिल का इसमें उदाहरण आता है. So Ajamil, he was chanting the holy name. अजामिल जो है वो हरिनाम का जप कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे. And but he was calling his son, who he named Narayan. लेकिन बुला किसको रहा है? हमारे बेटे को बुला रहे हैं. अब बेटे का नाम क्या रखा है? नारायण. नारायण. So devotees gave their sons and daughters names of the Supreme Lord. भक्त लोग जो है अपने बेटे बेटियों का नाम रखते हैं, भगवान का नाम पे रख देते हैं. So if we call them, then we are calling out the holy name every time. यदि हम उनको बुलाते रहते हैं तो उस समय हरिनाम का उच्चारण हो रहा है. हरि भगवान के नामों का हो रहा है उच्चारण. Yeah. So he was chanting the name of Krishna with a material conception because he wanted to
call his son. तो वो नाम तो कर रहे थे, लेकिन भौतिक धारणा के आधार पर नाम कर रहे थे, क्योंकि वो तो अपने पुत्र को बुला रहे थे, नारायण को। He was chanting Narayan, but he was thinking not of Narayan, but of his son. नारायण के नाम को तो कीर्तन कर रहे थे, लेकिन नारायण को नहीं बुला रहे थे, अपने बेटे को बुला रहे थे। So that's the first time of Namabhas. And the second time, the second is Sanketa. तो ये नामावास के स्तर हैं, जैसे एक तरीके का ये हो गया, और दूसरा है संकेता। So syllables, Sanketa. So Sanketa means that one accidentally has a combination of syllables who form the holy name. संकेत इस तरह का है कि शब्दों का ऐसा संयोग जिनमें हरिनाम आ गया, शब्द इस तरह जुड़े, बहुत शब्द इस तरह बनाए जिसमें हरिनाम आ गया। So there was a Yavana, a Muslim, and he was hit by the tusk of a boar and in his belly, and he was dying. एक यवन था, यवन को क्या है, तीर लग गया था छाती में। And he was सुअर का जो दांत लग गया था और वो मर रहा था। and then he was calling out, Haram, Haram, this is abominable in Arabic. वो अरबी में बोल रहा था, हराम हराम, मतलब ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। So it formed the holy name accidentally. तो उसमें ये संकेत तो दूसरा रूप है कि उसमें हरिनाम संयोग से हर राम राम आ गया शब्द, And he attained liberation. और मुक्ति हो गई। That. And then you have those who in Parihas who are jokingly were chanting the holy name. और फिर परिहास का एक है संकेत कि जोकिंगली, मजाक मजाक में हरिनाम कर रहे हैं। Like Jarasandh. इस तरह जरासंध है उदाहरण। And he got also he got also liberation. He crossed over the material world. जरासंध में मुक्ति मिल गई, बहुत जगह से मुक्त हो गए वो। And then you have the last is Stoba or derision. Stoba or derision. अंत में जो है स्तोबा। Yeah, Stoba means he was chanting the holy name to criticize, and he was criticizing Krishna. तो मतलब हरिनाम तो कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण की आलोचना कर रहे हैं। That नाम लेके कृष्ण की आलोचना हो रही है। But even if you chant the holy name without attention, it brings also benefit, but it's limited. तो यदि आपका ध्यान नहीं है, संकेत रूप में हरिनाम कर रहे हैं, फायदा तो होगा, लेकिन सीमित फायदा होगा। That so these four types of chanting is the chanting of the holy name, but without real faith in Krishna. तो ये जो नाम है, ये भी हरिनाम का ही कीर्तन हम कर रहे हैं, लेकिन we will not get Krishna. No, without faith in Krishna, without believing in विश्वास नहीं, नाम तो हो रहा है, लेकिन विश्वास नहीं है कृष्ण। That and therefore, because they don't have faith in Krishna, they are situated at the lower the lower border of Namabhas, the beginning of Namabhas. क्योंकि कृष्ण में विश्वास आया ही नहीं है, तो नामावास के स्तर में ये निचला स्तर है। That नामावास के स्तर में तो है, लेकिन निचला है। but one who has genuine faith in Krishna and in the holy name, while anarthas are present in one's heart and one chants, that's called Shraddha. Shraddha Namabhas, chanting Namabhas with faith. लेकिन जब कोई नाम में जिसकी नाम कृष्ण को जानते हैं, कृष्ण में विश्वास है,
नाम कर रहे हैं तो श्रद्धा नाम आवास के स्तर पे आए। Haridas Thakur said this namabas can give you everything, हजरत साहब ने कहा कि नाम आवास में आपको सब कुछ मिल जाएगा, but not prema. लेकिन प्रेम नहीं मिलेगा। Therefore, you must come to the Shuddha Nam. इसलिए हमें शुद्ध नाम के स्तर पे आना ही पड़ेगा। But one must come to the Shraddha Nam, and then these anarthas will go. लेकिन पहले हमें आना चाहिए श्रद्धा नाम के स्तर पे, तब ये अनर्थ सब चले जाएंगे। So that Shraddha will also be cultivated by hearing the Bhagavata. Yeah. So, Namabhas cannot give directly Krishna Prem. तो नामाभास में कृष्ण प्रेम नहीं है। श्रद्धा नाम स्तर आ गए, श्रद्धा नामाभास, लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। But it will help us to come to the Shuddha Nam. लेकिन श्रद्धा नाम स्तर की बात धीरे धीरे शुद्ध नाम के स्तर तक पहुंचने में हमें मदद मिलेगी। By following sadhana, यदि हम साधना का अभ्यास करते रहेंगे तो, as given to us by the spiritual master, जो कि आध्यात्मिक गुरु हमें बताते हैं किस तरह करनी है साधना, and then one can get love of God. और उसके बाद शुद्ध प्रेम प्राप्त हो सकते हैं। So, tomorrow we will speak further about this anarthas. तो कल हम और चर्चा करेंगे इन अनर्थों के बारे में। And we will hopefully come to Nishtha tomorrow. कल वो तो हम निष्ठा के स्तर पे आ जाएंगे, मतलब निष्ठा की चर्चा करेंगे। Any question? कोई प्रश्न है? Yes. I have very basic problem. Very nicely you explained all these philosophies and how we can overcome step by step and come to Nishtha level. But the thing is that probably I will be applying a couple of days and then I forget. So how I can apply over the long period of time? महाराज, एक मूलभूत समस्या मेरे साथ है कि आपने जो बताया बहुत अच्छा बताया, एक के बाद एक व्यवस्थित तरीके से सारी स्थितियाँ बताई, लेकिन मेरे साथ समस्या है कि कुछ दिन तो मैं इसको उपयोग में लाता हूँ लेकिन फिर उसके बाद भूल जाता हूँ। तो कैसे हम निरंतर इसको अपने जीवन में अपनाएं इन शिक्षाओं को? Srila Prabhupada said many times, first become conscious and then become Krishna conscious. श्रील प्रभुपाद ने बहुत बार कहा कि पहले तो चेतन बनो, फिर कृष्ण चेतना के स्तर पे आओगे। So today we are hearing very deep points about what it means to practice Krishna consciousness properly. तो आज हम चर्चा कर रहे हैं, अभी जो है बहुत गहरे बिंदु चर्चा कर रहे हैं कि वास्तव में कृष्ण भावना का सही से अभ्यास करने का अर्थ है क्या। But it's not just by hearing that it's going to solve the problem. लेकिन ऐसा नहीं है कि जरा हमने श्रवण कर लिया उससे समस्या का हल हो जाएगा। Unless one is advanced. जब तक हम बहुत उन्नत स्तर पे ना आ जाएं तब की बात लगे। We have to learn this by association with pure devotees. हमको इस विधि को सीखना है शुद्ध भक्तों के संग में। That's an important aspect. ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। That and always think I'm chanting, but I have to go internal absorption. तो हमें सोचो कि मैं हरिनाम तो कर रहा हूँ लेकिन अंदर जो है मुझे मग्नता लानी है, अंदर डूबना है मुझे हरिनाम में। Many times we chant and we remain on the level of the mind. Many times we chant when we remain on the level of mind. हम कई बार हरिनाम तो करते हैं लेकिन मन के स्तर पे ही हैं। That and yeah, it helps a bit, but it brings us not really to the point of getting rid of these anarthas. थोड़ी मदद तो मिलती है इससे, लेकिन अनर्थों से मुक्ति होने में ज़्यादा कुछ मदद नहीं मिलती इससे। I remember always a very simple instruction of Guru Maharaj. मैं हमेशा गुरु महाराज के एक सरल उपदेश गुरु महाराज ने दिया था, उसको मैं स्मरण रखता हूँ। And remembering that instruction is really something that helps. और उस उपदेश को जब मैं स्मरण रखता हूँ तो उससे वाकई में मदद मिलती है मुझे। And it's very simple. और बहुत सरल उपदेश है। Some think it's too simple. बहुत ही सरल उपदेश है भाई।
Someone asked Srila Prabhupada, asked Guru Maharaj, Bhakti Maharaj, what does it mean chanting Hare Krishna? गुरु महाराज किसी ने पूछा कि हरे कृष्ण जप करने का अर्थ क्या है, कैसे? And he said, chanting Hare Krishna means saying to Krishna, I love you. हरे कृष्ण का अर्थ है कि हम कृष्ण को बोल रहे हैं कि I love you, मैं आपसे प्रेम करता हूँ. So that should be the internal mood that we need. तो ये हमारा आंतरिक मनोभाव हमको चाहिए. And that will help you to overcome anartha nivritti. तो अनर्थ निवृत्ति को पार करने में आपको मदद मिलेगी उससे. So that mood while chanting. That's the mood of chanting. तो यही है जप करने का मनोभाव. Is it too simple? क्या सरल है ना बहुत? Anyway, that's what it is. Put your love, all your affection in the chanting. हमने ऐसा ही मतलब ये है, आपका प्रेम, आपका स्नेह जो है जितना है वो सब हरिनाम कीर्तन में डालिए. It's this love that helps you to control the mind. तो ये जो प्रेम है ये मदद करता है आपकी मन को नियंत्रित करने में. You can chant and your mind wanders and you bring it back and it becomes like a fight in the mind. आप जब कर रहे हो मन भाग रहा है, फिर मन को वापस लाते हो तो मन के साथ युद्ध हो जाता है, चल रहा है. It's just a useless business. तो व्यर्थ का ही कार्य हो गया. It doesn't help much. ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी इससे. But if you chant with love, it will come easy to control the mind. यदि प्रेम से जप करेंगे, प्रेम के साथ, तो मन को नियंत्रित करना आसान हो जाएगा. We may not have big love for Krishna, but we can try to give whatever affection we have to Krishna. हो सकता है कृष्ण प्रेम तो हम नहीं है हमारे पास, लेकिन जितना हमारे स्नेह हमारे अंदर है वो हम कृष्ण को देने का प्रयास करें हरि नाम करते हैं. Hare Krishna. हरे कृष्ण. Good. Yeah. At the end. Okay. और प्रश्न दूसरा कोई पूछना चाहते हैं आप? One last question, maybe. No. Then we start tomorrow. We continue tomorrow. Thank you very much. That Srila Haridas Thakur ki, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur ki, Srila Prabhupada ki, Guru Maharaj ki, Shri Gaura Premanand.